A very good evening to everyone. Right? Uh, in the last class, you had a test of reported speech, and I must appreciate that. Yes, most of you try to improve, but yes, beta, whenever the next test is there, I want more improvement. That is because every time you will not be getting time to explain the entire concept. So, what happens is in between, we need to revise everything, right? Today we are going to start with a poem, Rain on the Roof, right? And this poem is about memories. This poem is about the healing power of nature, the healing power of rain. Especially when you are reminiscing something. Reminiscing मतलब आप किसी चीज को याद कर रहे हो. तो according to the poet, the rain acts as comforter. मतलब वो हमें comfort देता है. I don't know about everyone. I'm not personally in favor of any rain and all because I don't know, but yes, there are people who love rain. There are people specifically जब poets होते हैं, they feel rain as a symbolism. मतलब वो उससे सिंबल लेते हैं, ये इसके लिए, इट इज फॉर दिस. लाइक इन दिस पोएम ऑल्सो द रेन हैज बीन द सिंबल ऑफ द टीयर्स. आंसुओं के लिए जो है इट हैज बीन यूज्ड. द पोएट एक्चुअली जहां पर हम पढ़ रहे हैं, ही इज अ लिटिल बॉय, छोटा सा बच्चा है. ही इज सिटिंग इन हिज कोजी लिटिल बेड. अपने छोटे से बेड पर वो बैठा हुआ है, लेटा हुआ है. And at that particular time the rain is falling and there is a sound when the rain is pattering on the terrace. मतलब जब उसके छत पर वो पट 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 की आवाज के साथ नीचे आ रहा है, तो he is reminiscing all the memories. He is also remembering his mother, the mother who is dead. जिसकी मदर है वो अब नहीं है. तो he feels that as if his mother is looking upon him. आपकी जो पोएम है इसके अंदर 2 paragraphs have been cut. Means in the original there are 2 more paragraphs, but here we are having only till the mother has come and he is reminiscing, he is remembering all those moments. और उसको ऐसा लगता है that this rain is a symbol of comfort. It is the healing power. उसके जो दुख है, मतलब जो अंदर से वो दुखी है, that his mother is no more with him, तो शायद वो उसको heal कर रहा है. The paragraphs, it is divided that he's sitting or he's lying on his bed. It's a small cottage. The bed is cozy, मतलब बहुत comfort है. वहाँ पे लेटा हुआ है. He could see the clouds. यहाँ जो clouds हैं, उसको वो use कर रहा है for the rain, humid shower. Means the rain bearing clouds, which are also our emotions. Because the rain bearing clouds make the sky dark. अभी आप देख सकते हो बाहर कितना अंधेरा अंधेरा सा है ड्यू टू द क्लाउड्स. एंड दिस ही इज कंपेयरिंग टू द डार्कनेस ऑफ अवर लाइव्स. ही इज डिस्क्राइबिंग इट एज अ मेलनकॉली. मेलनकॉली मतलब सैडनेस. मेलनकॉली मतलब सैडनेस. Then it starts raining and he is feeling that rainfall as a spirit of peace. उसको जैसे जैसे आवाजें आ रही हैं, आवाज आ रही है, he is getting lots of imagination as well as memories. दोनों.
मतलब एक तरफ इमेजिन कर रहा है, दूसरी तरफ उसे पुरानी यादें जो है दे आर ऑल्सो कमिंग, एंड हियर ही इज remembering his mom, his mother, who used to pamper him, who used to look after him, who used to make him sleep till morning. मतलब आराम से सोते रहो बेटा, कोई बात नहीं. She would allow him to sleep and dream. He visualizes that affectionate look, अपनी मदर का वो प्यार भरा लुक वो देख रहा है. And this is the rain which is bridging the force, that is a bridging force between his past as well as his present. Thus, the poem Rain on the Roof, on the whole, we can say that it is about the healing power of rain. We have lots of, in each paragraph, we have first alliteration, then we also have transferred epithet, onomatopoeia, personification. These four are there. मतलब ये जो चार आपके poetic devices हैं, it is there in this poem. And of course, there is one more which is called as refrain. Now, what is refrain? Refrain का मतलब होता है when 2 or 3 lines are repeated after every paragraph. आपने गाने सुने होंगे, हिंदी गाने तो हम लोग सब सुनते हैं, every whatever song. You must have seen जो पहला 2 लाइन होता है, that is repeated after every stanza, after every paragraph. That is called as refrain. In this poem also we have refrain. Yes, your face isn't that much clear. Very good. Prince, where is your... Okay. I'm sharing the screen on your laptop or anything. The very first paragraph goes like this. When the humid shadows hover. Humid shadows here is actually, you can say it is a kind of metaphor. It's metaphor. Why? Humid showers यहाँ पे, humid shadow is for the clouds. Humid shadow has been used for the clouds. And means humid मतलब with rain. Hover all over the starry spheres. मतलब जो बादल हैं वो आसमान में इधर उधर घूम रहे हैं. Starry spheres मतलब the sky which is full of stars. The sky which is full of stars. And the melancholy darkness, as I had told you, melancholy मतलब होता है बेटा sad, very sad. Darkness, he says, because due to the presence of the cloud, the dark cloud, the sky was looking dark and it looked as if the sky is weeping. Here he is also comparing his own tears to the rainfall. And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. This means weeps in rainy tears matlab the clouds bring down the rainfall. The clouds bring down the rainfall. What a bliss to press the pillow
of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Then he says, it is a blessing. It is just like a blessing that he is sitting in his comfort, he is sitting in his cottage and listening to the cottage chamber means his bedroom, and he is listening to the raindrops that are falling on the roof. Lie listening to the patter matlab the sound. Patter here is the sound of the soft rain overhead matlab on the roof which is falling on the roof. He is feeling relaxed. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. Tinkle means a sound. And 1,000 dreamy fancies into busy being start. And 1,000 recollections weave their air threads into woof of the as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now he says, when he is hearing these raindrops which are falling on the rooftop, everything which is falling on the shingle मतलब ऊपर जो रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स होते हैं उनको हम लोग शिंगल्स बोलते हैं. We call them as shingles. So whenever there is a sound, that short light ringing sound, tinkle on the shingles, that looks as if something is echoing. Echoing मतलब कुछ उसको याद आ उसको मतलब कि कुछ what is the meaning of echo? जब हम कुछ बोलते हैं तो चीजें गूंजती हैं. And 1,000 dreamy fancies means he is having different fanciful imagination. He is into busy being start. मतलब बड़ी जल्दी he is able to. Human beings मतलब वो खुद के लिए कर रहा है. यहाँ पर busy being is used for human being. Busy human being. Here he is using it for himself, and he is able to imagine lots of fancy things. And also 1,000 recollections means the memories. Weave their air threads into woof. Woof का मतलब होता बेटा when we are हम loom जो बनाते हैं जब हम लोग चरखे से मतलब यूजिंग द लूम जब हम जो धागे से जो हम बनाते हैं उसको हम वूफ कहते हैं. इट इज लुकिंग एज इफ दे आर वीविंग देयर एयर थ्रेड इनटू द वीव मतलब कि हेयर दे आर सारा जो है दे आर जॉइनिंग टुगेदर इनटू अ पिक्चर. And I listened to the patter of the rain upon the roof. Means while he was listening to the sound of the rain that was falling on the roof. He is imagining the dreams. He is also recollecting the memories of the past, and both of them are weaving a thread. The third stanza is about his mother. Here he introduces to his mother. Now in memory comes my mother. As she used in years agone, मतलब कि जैसा वो पहले हुआ करती थी. She used to be वैसे. Her mother when she was alive, जैसे वो पहले हुआ करती थी वैसे. So यहाँ पर the memories what he is talking is about his mother. He is talking about his mother. To regard the darling dreamers, ER का मतलब होता है while. is an old word. It is an old English use for while. मतलब when she used to be
एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, मतलब वो अपने जो बच्चे हैं, डार्लिंग ड्रीमर्स हेयर आर द चिल्ड्रन, डार्लिंग ड्रीमर्स हेयर आर द चिल्ड्रन, दैट इज द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स, उसके उसके भाई बहन, वो उनको देखा करती थी। एंड शी वुड लीव देम टू स्लीप, वो उनको जो है सोने दिया करती थी, टिल द डे ब्रेक सो दैट दे हैव द स्वीट ड्रीम्स, मतलब दे आर स्लीपिंग वेल। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मतलब अभी भी उसको ऐसा लग रहा है, ही इज स्टिल फीलिंग द मदर्स गेज, अपनी ममा की जो गेज है, जो ममा प्यार से देखती है, वो उसको अभी भी महसूस कर रहा है। एज आई लिस्ट, यहां पर बेटा लिस्ट का मतलब है लिसन, द लिस्ट इज एन ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर लिसन। यहां लिस्ट का मतलब वो लिस्ट नहीं है जो हम बनाते हैं, हेयर लिस्ट इज लिसन। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, एज आई सेड, रिफ्रेन का मतलब होता है एनी स्टेटमेंट विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, which is played upon the shingles by the patter of the rain, मतलब whenever the sounds he is hearing of the rainfall, he is reminded of the past, he is reminded of his mother who is now no more. So another words in another words we can say that this poem is all about memories. This poem is all about dreams. It is, you can say, the recollection. It is the recollection of a child who is now remembering. Also that it is giving the healing power of the rain. Rain यहाँ पर जो है it is acting as a healing power, और जैसे जैसे बारिश आ रही है वो उन यादों के साथ, इवन दो ही इज सैड, ही इज मेलनकॉली, लेकिन उसके बावजूद भी ही इज फीलिंग अ सेंस ऑफ, ही इज फीलिंग अ सेंस ऑफ रिलीफ, समथिंग जो उसको सूद कर रहा है, दैट इज रेन ऑन द रूफ। Once again I'll be completely revising it and then I'll help you out to write down the literary devices of the chapter, which is more important, right? When the humid shadows hover over all the starry sphere and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. The poet is saying कि जब काले काले बादल, ह्यूमिड शैडोज हियर इज द क्लाउड विच इज फुल ऑफ रेन, ह्यूमिड क्योंकि गीलापन, इट हैज स्प्रेड ओवर द स्टारी स्फीयर्स मीन्स द स्काई, एंड देयर इज अ काइंड ऑफ सैड डार्कनेस विच विल सून टर्न इनटू रेनफॉल. दिस इज ऑल्सो द ट्रांसफर्ड एपिथेट, ही इज अपनी फीलिंग्स को वो इसके साथ में जोड़ रहा है. Then he says, what a bliss, मतलब ये एक bliss है, bliss मतलब blessings है. To press the pillow of a cottage chamber bed, मतलब अपने बेड पर आराम से तकिए को पकड़ के बैठ जाओ एंड जो आवाज आ रही है बारिश की उसे सुनो. It really soothes us, मतलब ये हम लोगों को जो है सूदिंग देता है. Every tinkle, tinkle means every drop that is falling on this roof, हर एक मतलब कि शिंगल पर जो लकड़ी के टाइल्स होते हैं उन पर जैसे जैसे वो गिरता है, that looks as if something is echoing, कुछ जो है वो इको कर रहा है, गूंज रहा है. And 1,000 dreamy fancies into busy being start, and this boy, ये जो लड़का है, he is fancying, he is imagining a number of dreams and 1,000 recollections. साथ में he is also recollecting some of the old memories, कुछ
पुरानी मेमोरीज जो है उनको भी याद कर रहा है। एंड बेटा यहां पर जो पुरानी मेमोरीज है, इट इज अबाउट हिज मदर। दे आर ऑल्सो वीविंग, मतलब एक एक करके सब जुड़ रहे हैं। वीव का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बुनना। इट दे आर ऑल फ्रेमिंग इनटू अ पिक्चर। When he was listening to the patter of the rain upon the roof. Now in memory comes my mother. अब उसी मेमोरी में उसकी जो मदर है, she is there as she used in years agone, means when she was alive. He was visualizing his mother's face the same what when she was alive. To regard, regard यहाँ पर it is not for respect. Here to regard means when she used to love, she used to pour her affection on the darling dreamers. Darling dreamers are the poet and his siblings who were sleeping. As she left them till the dawn, and she will leave them. उनको बड़े प्यार से देखती और उनको सोने के लिए छोड़ देती. Oh, I feel her fond look on me. अभी भी मतलब वो कह रहा है कि even till now I am able to see her fond look as I listen to this refrain. मतलब as he was listening to this refrain. यहाँ पर again list means something which he is hearing, which he is listening, which is played upon the shingles by the patter of the rain. जो आवाज आ रही थी उसके थ्रू. Right now, kindly we will be doing the poetic devices of the same, right? Humid shadows hover. यहां पर जो humid and hover है, this is alliteration. The letter H is repeated. Humid hover. Again the same starry spheres. Press the pillow, lie listening, all are alliteration. Press the pillow, PP, lie listening, LL. Patter. Onomatopoeia. Onomatopoeia are all those words जिनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती, but with their sound they give the meanings, like patter, chatter, ting, tongue. हम ऐसे आवाज करते हैं ना, they are all onomatopoeia.
melancholy darkness. Transferred epithet. डार्कनेस इज नाउन, और नाउन के साथ जब हम कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं, मेलेंकोली, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, मतलब हम उसके थ्रू वी वांट टू गिव सम अदर मीनिंग. यहां मेलेंकोली डार्कनेस इज फॉर द डार्कनेस विच हैज बीन फॉर्म बाय द क्लाउड्स, एज वेल एज हियर द डार्कनेस इज फॉर द हिज ओन sorrow. Now the second paragraph. Again, busy being. Busy being. Their thread. Their thread. Both are alliteration. Tinkle is onomatopoeia. Tinkle is onomatopoeia. Dreamy fancies. Transferred epithet. When the lines are repeated and I lie listening to the patter, as I listen to the patter, as I listen to this refrain, these are all repeated. This is called as refrain.
एनजैम्पमेंट होता है जब आपकी अगली अगली जो लाइन होती है विदाउट एनी कॉमा और फुल स्टॉप, जब लाइन कंटिन्यू होता है उसको हम एनजैम्पमेंट कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हो इन द फर्स्ट वन होवर्स फेयर्स एंड डार्कनेस में कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है। In me refrain shingles, there is no full stop or comma. So this is called as enjambment. There are poetic devices only in the first four lines of every paragraph. Of each paragraph, the rhyming scheme is only in the first four. Like देखो, hover A, spheres B, darkness C, spheres के जैसा tears इसीलिए B. So A, B, C, B. Similarly, in the second paragraph also, every tinkle on the shingles. Shingles A, heart B, fancies C, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल अलग अलग वर्ड्स हैं. दे आर थ्री डिफरेंट वर्ड्स. हम राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं? जो हमारा लास्ट लेटर होता है उससे हम साउंड्स को मैच करते हैं. अगर सेम साउंड होता तो हम सेम उसको जो है सेम लेटर देते हैं. जैसे यहां शिंगल्स ए, हार्ट अलग है बी, फैंसीज बिल्कुल अलग है सी, हार्ट के जैसा स्टार्ट है इसीलिए अगेन बी. सो ए बी सी बी. मदर ए, एगॉन बी, ड्रीमर सी, अगॉन जैसे डॉन इसीलिए बी. ए बी सी बी. दिस इज द राइमिंग स्कीम. So in all, we have humid hover, then starry spheres, then press the pillow, PP, then lie listening, alliteration. In the second paragraph, we have busy being, their air threats, alliteration. Then in the third, darling dreamers, my mother, they are alliteration. In the all the मतलब कि all तीन जो तीनों है उसमें आपके जो patter, then tingle, these are the sound words, so they are onomatopoeia. Then we have transferred epithet, means transferred epithet होता है when there is a noun, जैसे darkness is a noun,
फैंसीज इज अ नाउन, ड्रीमर्स इज अ नाउन, और उसके साथ हम कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं. सो यहां हमने ड्रीमर्स के साथ डार्लिंग, देन फैंसीज के साथ ड्रीमी, एंड डार्कनेस के साथ मेलनकॉली जो है वो यूज किया है. सो दीज आर ऑल द ट्रांसफर्ड एपिथेट. इनके मीनिंग कुछ और हैं. देन वी हैव एनजैम्पमेंट. बेटा एनजैम्पमेंट का मतलब हो जाता है when you are writing any poem, और आप जो हो बिना रुके, मतलब नॉर्मली क्या होता है when we are writing the poem, after one particular sentence, हम एक सेंटेंस के बाद we put a comma, we could put a full stop or colon or semicolon, but when such expressions are not there, like यहां पर आप देख सकते हो मी, रेफ्रेन और शिंगल में कोई कॉमा या कोई फुल स्टॉप कुछ नहीं है, that we call as enjambment. Then you have the refrain, which is one of the most important, which has been asked from this poem many a times, as now we'll be having more on to MCQs. तो रेफ्रेन होता है कोई भी दो लाइंस आपके रिपीट होते हैं आफ्टर एवरी पैराग्राफ. I explained you in the very beginning when you listen to the songs, तो आपने देखा होगा जो पहली दो लाइन होती है that would repeat on after every paragraph. पैराग्राफ के बाद वो दोबारा रिपीट होता है. So that is what we call as refrain. So these are the important what we call as the poetic devices in this particular poem.